السلام علیکم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز. میں محمد ذکریہ. بی ای ٹی انسٹیٹیوٹس بسم اللہ نگر کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر یونیورسٹی کوئز کمپٹیشن منعقد ہوا. اس کمپٹیشن کے کوئز ماسٹر اور چیف گیسٹ جنابہ ڈاکٹر سیدہ بیگم رہے. بی ای ٹی کے ٹرسٹیز حضرات بھی اس موقع پر موجود تھے. کمپٹیشن میں حصہ لینے والوں کو اور اس کمپٹیشن میں جیت حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو انعامات سے نوازا گیا. آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز کی مکمل رپورٹ. پیارے طلباء کو اس بس میں شریک فرما تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماندہ منہاج حدیث کے ذریعے قافلہ خیر کی مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم نعمت پر ہم بارگاہ خداوندی سے سجدہ شکر بجا لاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. آمین. آج ہمارے ادارے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئز کمپٹیشن منعقد کیا گیا ہے جس میں مجھے مہمانوں کے استقبال کی ذمہ داری فراہم کی گئی ہے. میں سب سے پہلے مہمان خصوصی ڈاکٹر سیدہ بیگم HOD شعبہ اردو علمین آرٹ سائنس اور کامرس ڈگری کالج کو اپنے اور ادارے کی مرحبا کہتی ہوں. خوبصورت خدا نے ایسے کم لوگ بنائے جو دل کے ہو خوبصورت. خدا نے ایسے کم لوگ بنائے جنہیں ایسے بنایا ہے خدا نے آج وہ ہماری اس محفل میں آئے. اس کے بعد میں ہمارے ادارے کے ذمہ داران جناب محمد سیف اللہ اس شعر کے ساتھ میں آپ تمام ذمہ داران بی ای ٹی کو اس بس سے استقبال کرتی ہوں. آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو, پھول تو پھول تھے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو. میں ہمارے کیمپس ڈائریکٹر جناب محمد علی صاحب کو ادارے کی جانب سے استقبال کرتی ہوں. میں ہمارے کالج میں تشریف لائے ہوئے شہر بنگلور کے مختلف اداروں کے اساتذہ اور طلباء کو دل کے عوامی گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں, خوش آمدید کہتی ہوں. اس کے بعد میں بی ٹی کمپوزٹ پی یو کالج کے پرنسپل محترمہ سیدہ نازیہ حسین
اساتذہ اکرام کو اپنے اور ادارے کی جانب سے استقبال کرتی ہوں۔ آخر میں پھر سے تمام شرکائے مجلس کا استقبال کرتی ہوں۔ خوش آمدید۔ اب میں ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر سعیدہ بیگم صاحبہ کا مختصر سا تعارف پیش کروں گی۔ آپ قابل احترام شخصیت کے مالک ہیں۔ میں بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر ایسی عظیم شخصیت کو ملا ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری 2022 میں ٹمکور یونیورسٹی سے حاصل کی، ایم فل بنگلور یونیورسٹی سے حاصل کی، اور آپ آل انڈیا ریڈیو میں بہت سے پروگرام ہوسٹ کر چکے ہیں۔ دوردرشن میں بھی آپ بہت سارے پروگرام منعقد کر چکے ہیں۔ سالانہ روزنامہ میں 20 سے زائد مضمون لکھ چکے ہیں، یعنی کہ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں، اور 7 پیپر پریزنٹیشن کر چکے ہیں، اور آپ کے درس و تدریس کا تجربہ 29 سال سے ہے، یعنی 29 ایئرس، اور آپ بی ٹی سعادت النساء ڈگری کالج میں وائس پرنسپل رہ چکی ہیں، اور آپ 2015 سے آج تک الامین کالج میں ڈگری کالج میں شعبہ اردو میں کام کر رہے ہیں پروفیسر کی حیثیت سے۔ ماشاءاللہ میم۔ سامعین، آج کے اس موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آج کے اس پرآشوب اور پراگندہ ماحول میں جہاں ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے، پرانے فتنے نئے رنگ روپ کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور قومی، عالمی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی قرآن کی آیت کو تبدیل کرنے میں اور قرآن کی اس آیت کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت پر انگشت نمائی کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کو دہشت گردی کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرات و سامعین، سازشیں ایسی ہیں کہ اس کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات انسانی اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اور ہر وقت کوششیں ہیں کہ اسلام کا اصل چہرہ، نبی کا اصل حسن و جمال، آپ کا کردار، کیریکٹر، قرآن شریف کا اصل پیغام اور میسیج لوگوں تک نہ پہنچیں، اور یہاں تک کہ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر مسلمانوں کو اپنے ایمان و اسلام اور آئندہ نسلوں کی ایمان و اسلام کی حفاظت بڑی دشواری ہو گئی ہے۔ سامعین، ایسے میں شدت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کا کردار، اصل حسن و جمال، آپ کا کیریکٹر لوگوں کے سامنے آئے، اور آج کی یہ مختصر سی مجلس اسی کوشش کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اسکولز اور کالجز میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہو جائیں اور اپنے ذریعے معاشرے میں اس کو عام کریں۔ تو چلیں آئیں ہم سیرت کوئز کے اس خوبصورت محفل کو اپنے اصل مقصد کی طرف لے جاتے ہیں، اور سلسلہ سوالات شروع کرنے کے لیے اس کوئز کے سوالات میں ڈاکٹر سعیدہ بیگم صاحبہ کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرتی ہوں۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ تو میں سعیدہ بیگم صاحبہ کو آواز دیتی ہوں کہ وہ جلوہ افروز ہو جائے اور کوئز کا آغاز شروع کرے۔ یہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا
और ना उनका रास्ता जो रास्ते से भटक गए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। नबी नबी या नबी नबी, नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी। नबी का लब पर जो जिक्र है, मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है, मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में अद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है, मिसाल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक़ में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है, मिसाल आया, कमाल आया। गुरूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो हबशी रंग का गुलाम तेरा, बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है, मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में अद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है, ग्राम का मौजूद था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह में रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि अल्लाह ये कौन है? तो जवाब दिया गया कि ये आपकी उम्मत में से हैं, आपके फर्जंद हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से दुनिया की तकलीफ की गई। तो अंदाज़ा कीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में जो है एक ऐसी अजीम हस्ती पैदा करके जो है इंसानों पर रहमत बनाकर भेजा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ जो है गुजार सकें। तो मैं आज के बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट के BET PU कॉलेज के क्विज़ कॉम्पिटिशन में मैं आप तमाम का जो शहर बेंगलुरु से आए हुए मुख्तलिफ कॉलेजों की तालबात हैं, मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ। और अब जो है यहाँ मैं उन तालबात को जो है मदऊ कर रही हूँ। रानी सरला देवी PU कॉलेज की लड़कियाँ आए। BET PU कॉलेज, क्रिसेंट PU कॉलेज, अल-अमीन PU कॉलेज, गवर्नमेंट PU कॉलेज बसवनगुड़ी,
अजीज तालिबात, चंद जनरल रूल्स हैं जो मैं आपके गुजार कर रही हूँ। ये जनरल रूल्स हैं। One person will answer at a time from the team, right? If two answers came from the team, then no points will be given to the team. If answered after time, no points will be awarded. If other team answers the questions without being asked, then they will miss their question. Quiz masters or judges for decision is final, right? You have understood. Right answer. जवाब देने में जल्दी कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम traveled to Syria. Right answer. With whom did Muhammad sallallahu alaihi wasallam travel to Syria? Right answer. Abu Talib. Who killed Umayyah bin Khalaf in Ghazwa Badr? Who killed Umayyah bin Khalaf in Ghazwa Badr? Hazrat Bilal. Right answer. Who was the person sleeping in Prophet's bed at the night of migration? Who was the person sleeping in Prophet's bed at the night of migration? ऑडियंस में से कोई इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? मैं तालिबात से ज्यादा पूछना चाहूंगी। राइट आंसर। हजरत अली इज द राइट आंसर। राउंड 2 एमसीक्यू। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से राइट वन टू बी चोजन। करेक्ट आंसर 10 पॉइंट्स, नो नेगेटिव पॉइंट्स, मैक्सिमम टाइम 20 सेकेंड्स। पास क्वेश्चन करेक्ट आंसर 5 पॉइंट्स, पास क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 5 सेकेंड्स। ग्रुप ए के लिए टीम 1 के लिए सवाल, हाउ मेनी वर्सेस ऑफ सूरह अलक वाज रिवील्ड इन द फर्स्ट वही? हाउ मेनी वर्सेस ऑफ सूरह अलक रिवील्ड इन द फर्स्ट वही? पहली वही में कितनी आयतें नाजिल हुई? 5. राइट आंसर। फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम, मुझे ऑप्शंस देने थे, मैं भूल गई। फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम हजरत सारा, हजरत आसिया, हजरत मरियम, हजरत सुमैया? हजरत सुमैया। राइट आंसर। In which area of Makkah Jabal Nur is located? East, west, south or north side? Right answer. Name the first Khalifa. Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. First Khalifa. Hazrat Abu Bakr. Right answer. Which wife had no children? Hazrat Aisha, Hazrat Hafsa. Oh no, wrong question. Once again I'm asking. Which wife had children? Hazrat Aisha, Hazrat Hafsa, Hazrat Maimuna, Hazrat Khatija? Hazrat Khatija. Right answer. Rapid fire round. Correct answer 10 points. No negative points, maximum time 30 seconds. Bonus 10 points if all questions answer correctly before 30 seconds. Team 1 के लिए you have to answer. Name the 2 women who came for help at birth time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक के लिए सवाल है। Name the 2 women who came for help at birth time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On which hill did Muhammad sallallahu alaihi wasallam announce tabligh?
On which hill did Muhammad sallallahu alaihi wasallam announce tabligh? What is the name of the Prophet Muhammad's mother? Sallallahu alaihi wasallam. Where did Harab al-Fujjar took place? When did the Prophet? Team 2. How many times is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Holy Quran? 4 times. What work did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do during his teenage? He was a shepherd. Right answer. Hazrat Halima belongs to which tribe? Khuzar. Banu? Khuzar. Wrong. What is Ali's radhiyallahu ta'ala anhu blood relation with Prophet sallallahu alaihi wasallam? He was the cousin of Prophet Muhammad How sallallahu alaihi many times did Jibreel brought the verse? wasallam. 2400 times. Right answer. Team 3. How many sons? How many times did Ali radiyallahu ta'ala anhu have from Fatima radiyallahu ta'ala anha? How many sons did Ali radiyallahu ta'ala anhu have from Fatima radiyallahu ta'ala anha? Right answer. Who was Sahabi to whom Prophet sallallahu alaihi wasallam 2 of her daughters in marriage? Who was the Sahabi to whom Prophet sallallahu alaihi wasallam gave 2 of her daughters in marriage? Uthman ibn Affan. Right answer. What is the name of God, Prophet sallallahu alaihi wasallam's clan? Banu Hashim and Quraysh. Right answer. Team 4. Where did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away? Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father passed away. In Yathrib, Medina. Why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam migrate from Makkah to Medina? Because there were more prosecutions in Makkah. With whom did Prophet sallallahu alaihi wasallam travel to Medina during Hijrah? Abu Bakr Siddiq. Who joined the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr at Masjid al-Quba during Hijrah? Hazrat Umar. Wrong answer. 4. Correct. How many children did Prophet sallallahu alaihi wasallam had? How many children did Prophet sallallahu alaihi wasallam had? 7. Right answer. What was the name of the city where Prophet went to give dawah? What was the name of the city where Prophet sallallahu alaihi wasallam went to give dawah? What is the name of the horse-like animal which he rode on the blessed journey of? Aswa. Wrong. In which mosque Prophet sallallahu alaihi wasallam led the prayer for all? For both the teams, whose title is Abul Qasim. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Right answer. Alhamdulillah, BT qualifies for the final round. Now I request Selfie ma'am to choose another 5 sets for the second round. I request all the participants to come down. ये था कि इस उस कॉम्पिटिशन में आप लोगों ने आप लोग से उनके था दिस इज जस्ट ए वे टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेंट इन applause. We get a medal where winners from 3 prizes, second 3 prizes. Okay, and lunch will also be there for the Given by his grandfather. Team 1. Muhammad. Right answer. What did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam give his wife Khatija as mahar, that is dowry? 20 camels. Right answer. Was Khatija radiyallahu ta'ala anha a widow before she married to Prophet sallallahu alaihi wasallam? Yes. Right answer. How many daughters did Prophet sallallahu alaihi wasallam have with Khatija radiyallahu ta'ala anha? 4 daughters. Right answer. Which titles were Muhammad sallallahu alaihi wasallam famous since childhood? Which titles were Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wrong answer. Wrong.
Right answer. MCQs, correct answer 10 points, no negative points, maximum time 20 seconds. Pass question correct times 5 points, pass question maximum time 5 seconds. You have 4 options and this is MCQs. First, for team 1, at what age Khadija radiyallahu ta'ala anha married Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 40 years. 35, 60, 52. 40 years. Right answer. Who was the first child to accept Islam? Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhum. Wrong answer. Name the grandson of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali, Hazrat Abbas, Hazrat Zaid. Hazrat Ali. Right answer. Name the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali, Hazrat Abbas, Hazrat Zaid, Hazrat Hassan radiyallahu ta'ala. Hazrat Hassan radiyallahu ta'ala. Right answer. Who did Prophet sallallahu alaihi wasallam appoint as the first da'i to Medina? Options: Hazrat Mus'ab bin Umair, Bilal, Hazrat Zaid, Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala. Wrong answer. Pass. Hazrat Mus'ab bin Umair, Hazrat Bilal, Hazrat Zaid, Hazrat Zubair. Hazrat Bilal. Wrong answer. What to the audience? Audience. Sorry. Who did Prophet sallallahu alaihi wasallam appoint as the first da'i? That is Hazrat Mus'ab bin Umair, Hazrat Bilal, Hazrat Zaid, Hazrat Zubair radiyallahu ta'ala. Wrong answer. Right answer is audience. Who did the Prophet sallallahu alaihi wasallam appoint as the first da'i to Medina? Hazrat Mus'ab bin Umair, Hazrat Bilal, Hazrat Zaid, Hazrat Zubair. Wrong answer. No participants. Hazrat Zubair. Wrong answer. Anybody? Hazrat Mus'ab bin Umair. Right answer. Who was Muhammad sallallahu alaihi wasallam's twin sister? Laiba, Shima, Atika, Atiya radiyallahu ta'ala anha. Shima. Right answer. Correct answer 10 points, no negative points, maximum time 30 seconds, bonus 10 points if all question answered correctly before 30 seconds. Mama, make second. Children, you should listen to the question carefully. The previous time Steve was asking the questions off and on. Ma'am, repeat the question. Listen to the question because all the 5 questions will be posed in 30 seconds. If you ask her to repeat the question, you will lose your time. Be careful. What was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam paternal grandfather's position? He was the chief of the clan. Right answer. At what age of Prophet her mother died? 63. No, 60. Right. Who was the midwife of Prophet sallallahu alaihi wasallam? Al-Shifa ibn al-Awf. Right answer. How many times was Muhammad sallallahu alaihi wasallam's chest open? 4 times. Right answer. Team 2. Did Muhammad sallallahu alaihi wasallam get any sort of formal education? No. Right answer. What must you say when the Prophet sallallahu alaihi wasallam name is mentioned? Sallallahu alaihi wasallam. Right answer. Name any one maternal uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Maternal. Name the paternal uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam who was martyred. Name the paternal uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who was martyred. Shaheed jo हुए.
one of the three Christian monks or learned men who saw the Prophet ﷺ and recognized him as the last messenger? Buhaira, Nastura, Waraka bin. Right answer. Did his uncle Abu Talib accept Islam? No. Right answer. Hazrat Amna radiallahu ta'ala anha belongs to which family? Right answer. What was the first stage of revelation? 6 months. True. Right answer. Team 4. At what age did the first revelation come down? Pehli wahi. Who brought the revelation from Allah? Hazrat Jibreel alayhi salam. Right answer. Surah Muddassir in which chapter of the Quran? 29. Right answer. Who was the first male to embrace Islam? First male. Hazrat Abu Bakr. Right answer. Team 5. What was the name of the sword of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inherited? Matur. Right answer. How many Sahaba participated in Battle Badr? Who did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam appoint as the first Muslim? How many years did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam live in Medina? 53 years. Right answer. 53 in Makkah and 10 in Medina. Right answer. Batch 3, round 1. Maximum time 15 seconds. Maximum question correct answer 5 points. Name. Right answer. How many? 3. Right answer. Khalid. Name the son-in-law of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam who was not Khalid. खलीफा नहीं थे. आपके एक दामाद जो है खलीफा नहीं थे. पास. Hazrat Ali. राम वो खलीफा थे. Audience, name the son-in-law of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam who was not the Khalid. Right answer. Abu Las bin Rabi. Tell us the name of the sheep camel Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam traveled on when he migrated to Medina. Haswa. Right answer. Round 2 MCQs. 10 points. Maximum time 20 seconds. Pass time question 5 points. Pass question maximum time 5 seconds. First question. I give you 4 options. How old was Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at the time of marriage? 25. 25, 30, 35. 25. Right answer. Name the daughter of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anha and wife of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Zainab, Hazrat Khatija, Hazrat Aisha, Hazrat Hafsa radiallahu ta'ala anha. Hazrat Hafsa. Right answer. First servant to accept Islam. Hazrat Zaid, Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair radiallahu ta'ala anha. Zaid bin Haris radiallahu. Right answer. How many wives do our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had? 10, 11, 13, 16. 11. Right answer. Whose sons were Utbah and Utayba? Abu Lahab, Abu Jahl, Utbah bin Umayr bin Khalaf. Whose son was Utbah and Utayba? Abu Lahab, Abu Lahab. Right answer. Rapid fire. Correct. Answer.
10 points. No negative points. Maximum time 30 seconds. 10 points if all questions answered correctly. In 30 seconds. How old was Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam when his grandfather passed away? 8. Right. Where did Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's mother take him when he was young? Yathrib, Medina. Right. Where did Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's mother passed away? Abba. Right answer. Who brought Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam back to Makkah after his mother's death? His father's servant Ayman. Right answer. Team 2. Name one of the first lady to accept Islam. Hazrat Khadija radhiyallahu anha. Right answer. Who killed Umayyah bin Khalaf in Ghazwa Badr? Bilal radhiyallahu. Right answer. During the early Islamic period, where would the Muslims gather privately? In the house of Al-Aqam. Right answer. How many people embraced Islam in the early stage? 40. Right answer. Which people of creation team 3 के लिए है? Which family of creation shaitan belongs to? Family of jinns. Family of jinns. Right answer. How many battles did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam participate in? 23 or 24. Right answer. Did the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam get injured in any battle? In Battle of Uhud. Right answer. How many companions were with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam during Uhud when the rumors was spread that he passed away? How many companions were with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam during Uhud when the rumors was spread? Three correct. When did the Treaty of Hudaybiyah happen? When did the Treaty of Hudaybiyah happen? After the conquest of Makkah, how did the Prophet ﷺ treat the enemies of Islam, the Quraysh and those who persecuted, tortured the Muslims in Makkah? Name one of the famous battles the Prophet ﷺ participated in where battlefield was the outskirts of Medina. Wrong answer. What was the inheritance of the Prophet ﷺ? The Holy Quran. Right answer. Team 5. When did the Prophet ﷺ deliver his final public sermon? At his first and last Hajj. What food did Prophet ﷺ, peace be upon him, chose on night of Isra wal Miraj? What food did Prophet ﷺ choose on night of Isra wal Miraj? Did the Prophet ﷺ carry out any household chores? Yes, he did. Right answer. Which Prophet's uncle got captured in the Battle of Badr? Could you repeat it? Which Prophet's uncle was captured in the Battle of Badr? Abu Talib. Wrong answer. Sermon. Wrong. When did the Treaty of Hudaybiyah happen? Which daughter's name is Khatun-e-Jannat? Fatima. Right answer.
बैरून कुलियाती क्विज कंपटीशन का दूसरा या फाइनल राउंड है। इसमें 3 कॉलेजेस हैं। पहली कॉलेज आमिना बीबी पीयू कॉलेज, बीईटी पीयू कॉलेज, हिलाल पीयू कॉलेज। मैं इन तीनों टीमों का इस्तकबाल करती हूँ और मौजूद शुरका का भी जो है इस्तकबाल है। तो पहले फाइनल राउंड के लिए जनरल रूल्स जो है पहले की तरह ही है। 1 person will answer at a time from the team. If 2 answers came from the team, then no marks will be given to the team. If answered after time, no points will be awarded. If buzzer is pressed, team must answer it. If answer is correct, points will be awarded. Otherwise, team will attract negative points. If 10 points have been asked in a question as an answer, team has to answer all 10 names correctly. Even if 9 are correct, it will be considered as incorrect answer. If other teams answer the question without being asked, then they will miss their question. Quiz master's decision is final. Round 1, correct answer 10 points, no negative points, maximum time 15 seconds, pass question correct answer 5 points, pass question maximum time 5 seconds. Question to team 1. Who was the midwife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Al-Shifa bint Auf. Right answer. Angels are created from Nur. Right answer. Who is called as Imamul Anbiya? Who is called as Imamul Anbiya? Pass. Right answer. Who is called Zatul Natiqin? Team 1. Who is called as Zatul Natiqin? Pass. Pass. Who is called as Zatul Natiqin? Audience? Audience. Pass. Audience. Who is called as Zatul Natiqin? Zatul Natiqin के मानी होते हैं 2 दुपट्टे वाली। किसका लक़ब था? हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। राइट आंसर। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर ने जब आप गारे सौर में थे तो उस वक्त आपने अपने दुपट्टे को 2 किया और एक में जो है खाना बांधा था, इस वजह से आपका लक़ब ज़ातुन नातिक़ीन था। तो ये सवाल। Who is called Abu Turab? Ali. Right answer. Who is called Shair Rasool? Who is called Shair Rasool? Sallallahu alaihi wasallam. Pass. हजरत बिलाल। Wrong answer. हजरत हसन बिन साबित। Right answer. Team 1 के लिए सवाल, when did Fateh Makkah happen? When did Fateh Makkah happen? 8 Hijri. Right answer. How many Sahaba died during Jang-e Badr? 14 Sahaba. Right answer. Who wrote the Treaty of Sulh Hudaybiyah? Who wrote the Treaty of Sulh Hudaybiyah? Pass. Who wrote the Treaty of Sulh Hudaybiyah? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला। Right answer. Round 2 MCQs.
you have to choose the correct answer. Correct answer 10 points, no negative points, maximum time 20 seconds. Pass question, correct answer 5 points. Pass question, maximum time 5 seconds. First, team 1 के लिए सवाल है, who was the Caliph who ruled for 12 years? Who was the Caliph who ruled for 12 years? Abu Bakr, Umar, Uthman, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Umar. Right answer. Who was the Caliph who ruled for 10 years? Option Abu Bakr, Umar, Uthman, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Usman. Right answer. Who was the Caliph who ruled for 4 years? Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anha. Hazrat Umar. Wrong. Pass. Who was the Caliph who ruled for 4 years? Hazrat Abu Bakr Siddiq. No. Next. Wrong answer. Hazrat Ali. Right answer. What sports did the Prophet sallallahu alaihi wasallam learn when he went to visiting his father's village? Right answer. How old was Muhammad sallallahu alaihi wasallam when his mother passed away? 653. He was 6 years old. Right answer. How many Muslims participated in the Battle of Tabuk? 10,000, 25,000, 30,000, 1,000. Wrong answer. How many Muslims participated in Battle of Tabuk? Options 10,000, 25,000, 30,000, 1,000. Pass. 13,000. Correct answer. सिर्फ 30 seconds रहते हैं, थोड़ा जल्दी आंसर करना. Don't ask me to repeat. Your time will go. Right? Correct answer 10 points. Maximum time 30 seconds. Bonus 10 points if all questions answered correctly. In 30 seconds. Team 1. When was the Battle of Taif done? When was the Battle of Taif done? 5 Hijri. Wrong. Which family of creation does the Satan belongs? Angel, humans or jinn? Jinn. In which Sahaba's house Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam camped when he migrated to Medina? Hazrat Arqam. Wrong. Who wrote the revelation from Allah? Hazrat Ibrahim. Right answer. 2 correct. Team 2. What was the sport which Prophet sallallahu alaihi wasallam played with Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anha? Running. Right. How many people embraced Islam in the early stage? 40. Right answer. Who are Munkar Nakir and what is their responsibility? Who are Munkar Nakir and what is their responsibility? Munkar Nakir, कब्र के सवालात. Right answer. To which Sahabi Prophet said, "May my parents be sacrificed for you"? Abu Bakr. Wrong answer. Team 3. Angel Malik, what is his responsibility? Wrong answer. Which is the angel to whom Prophet sallallahu alaihi wasallam in his original form at 7th heaven, Sidratul Muntaha? Which is the angel to whom Prophet sallallahu alaihi wasallam saw in his original form at 7th heaven in Sidratul Muntaha? Wrong answer. Right answer. When were the women commanded to observe parda, that is veil themselves? Right answer. Which Sahabi joined Battle of Tabuk lately due to his camel? Time up? Okay. 2 correct. Actually, students, you have to answer me promptly. Rules. Correct answer 20 points, wrong answer 10 points. Maximum time 90 seconds. No pass, 1 buzzer is pressed, team must answer.
Correct answers will be considered when all names are said, otherwise negative points. Who were the Ashra-e Mubashshira whom the Prophet ﷺ guaranteed paradise? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुबैर इब्ने अव्वाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद सईद तलहा इब्ने अबू उबैदा. Right answer. Describe some qualities of Prophet ﷺ, peace be upon him. He was very soft spoken. He never sought for himself. He never take revenge from anyone. He smiles after, and he do equal for everyone, and he loved her children, and he never hurt anyone. He was extremely charitable and generous person. Right answer. Name some miracles of Prophet ﷺ. Splitting of Quran, water rushing from his noble finger, animals giving more milk, trees and stones giving salam to him, foretelling future events and so on more to coming through. Stone leading kalma in his hand and just covering his animal's eyes, animals giving more milk, clouds covering him as he walks, and many. Right answer. Name the nannies of the Prophet ﷺ. Tawaba, Halima, Shema, and Umayya radiallahu ta'ala. Right answer. Name the loving wives of the Prophet. हज़रत खदीजा, हज़रत सौदा, आयशा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैनब बिन्ते जशा, उम्मे सलमा, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, उम्मे हबीबा, जुवैरिया, सफिया, मैमुना रज़ियल्लाहु ताला. Name the 6 paternal aunties of Prophet ﷺ. हजरत साफिया, अरवा, अतीफा, उम्मे हकीमा, आयदा, मैमुना, उमैमा, बर्रा. Right answer. Name the grandmothers of Prophet ﷺ. फातिमा बिन्ते उमर, बर्रा बिन्ते बर्रा. Right answer. Name the 5 sincere assistants of Prophet ﷺ. अनस बिन्ते मलिक, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, उम्मे अयमन इब्ने उबैद, अस्फा इब्ने शारिफ, उक़बा इब्ने. Right answer. What were the names of the 12 paternal uncles of the Prophet ﷺ? हारिस, हमजा, अबू तालिब, अबू लहब, गैदा, मुहर्रम, उसुम, वीरा, अब्दुल काबा, हिज्र. Right answer. Round 5. Quiz master's favorite buzzer round. Correct answer 20 points. Wrong answer 10 points. Maximum time 45 seconds. Pass question, correct answer 10 points. Pass question, maximum time 15 seconds. One buzzer is pressed, team must answer, and wrong answer will result in negative points. Listen to me carefully. Prophet ﷺ was sick or tired. There was one qafila which came to his town and was traveling back in morning. So he got up and was going to give them dawah. But his wife stopped him, stating that you are tired. You can meet them later. But Prophet replied that, what will I say to God if I miss to give them dawah? And then he went and gave them dawah. What was the name of wife? हज़रत आयशा.
Wrong answer. Audience? Al-Shifa Bihar. Wrong answer. Hazrat Khadija radhiyallahu anha. Right answer. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात जो है इतनी मेहनत करते कि आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे जब आप नबूवत पे फाइज हुए, और दिन रात की मेहनतों से सिर्फ आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 63 साल की थी। सिर्फ 23 साल की खलील मुद्दत में आपने एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जिसमें किसी गुनाह की, किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सहाबा चाहे मुहाजिर हो चाहे अंसार हो, दोनों भाई भाई थे। आज हम अपनी गिरबानों में झांक के देखें कि हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा हुस्न सलूक कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर हमारी जिंदगियों में होना जरूरी है, वरना जो है हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का दावा करते हैं, लेकिन कोई चीज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल, Prophet was staying in a room and a companion came to him and saw the marks of man on his blessed face, and said to Prophet sallallahu alaihi wasallam that, "O Prophet, you are the messenger of Allah and you are living so simply, but the kings of Persian and Roman Empire sleep in forts on bed. What was the name of companion?" Audience? Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Right answer. एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सो रहे थे कि आपके चेहरे और आपके जिस्म पर जो है बोरिए के चट्टान थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप ज्यादा मुस्तहिक हैं उन मालदार पर्शियन और रोमन एम्पायर के, कि उन बादशाहों के, कि आप जो है बिस्तर पे, अच्छे बिस्तर पर सोए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं सादा जिंदगी बसर करूँ। आज खुद हम अपने गिरबानों में झांक के देखें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवे को कितनी हद तक जो है हम फॉलो करते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी हमारे लिए नमूना नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी, मैंने मेरी उम्मत पर जो है मैंने कहा कि तुम नमूने हयात हो, जिंदगी गुजारने का अगर सलीका है तो आपकी जिंदगी में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अब इंसानियत के लिए जो है रुश्द और हिदायत का मरकज थे, तो हमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। During Meccan period, our Prophet sallallahu alaihi wasallam was called by bad names. When he started calling people towards Allah, he was tortured along with his companions emotionally, physically and financially. Yet he did not give up on the task to call people towards Allah. Once he was doing sajda in front of Kaaba, and camel waste was put on his neck, and it was putting so much weight on him that it was becoming difficult to get up. Even though many companions saw it, but none could help because of helplessness. But one companion saved him when she was informed by removing all his stuff. Name the companion. Right answer. Fatima. Right answer. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी हो या मदनी जिंदगी हो, हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी मेहनत की, जद्दोजहद के बाद एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया था जिसकी गूंज सारी दुनिया के अंदर दिखाई देती है। अगर नहीं जानते तो मुसलमान ही जानते हैं, वरना जो है आप देखेंगे कि हर जगह इस्लाम जो है फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारनामा ये है कि आपके उसवा हसना हमारे लिए अमली तकलीद है।
कहते हैं कि एक बार उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का अमली नमूना थे, यानी कुरान जो कुछ भी कहता था वही आपकी ज़िंदगी थी। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुरान और सीरत दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अब अमली ज़िंदगी में जो है खुशियाँ ला सकते हैं। अगर हम मुसलमान बनना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सुबह को अपनी ज़िंदगियों में लाएं, और अमली ज़िंदगी में जहाँ आप एक तरफ आप बेटियां हैं और इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में आप बीवियां बनेंगी, माएँ बनेंगी, आपकी गोद से जो है ऐसी नस्लें तैयार हों जिसमें सहाबा और सहाबियात की खुशबू हो। वाखिर दावाना है। Awaited moment of the day. So you all can see here. And the runner-up team for the event is Amina BPU College with 120 points. And the winner team of the day is Alhamdulillah, it is BT Composite PU College with 155 points. Rustahana, Satyanath Grace International College, Amritsar, Asfiya Falak. PU College, Tuba Hamid, Inshara Fazil Abbas Khan PU College. Shifa Ayman Al-Amin PU College, Rafia Anjum, Adiba Afrin. Amina Kausar Rani Sarda Devi PU College, Ruqayya. एक एक कॉलेज साथ में आइए. PU College Chhagade Nagar, Noor Fatima, PU College Chhagade Nagar. मारूफा तस्नीम जामिया उलूम, खदीजतुल कुबरा जामिया उलूम, फारिया तबस्सुम जामिया उलूम. सानिया कौसर हुसैन PU कॉलेज चामराजपेट, सुहाना नाज, क्रिस्टियन PU कॉलेज. You want to go? Wait, just. कौशिया हिलाल कंपोजिट PU कॉलेज, सुहाना खान हिलाल कंपोजिट PU कॉलेज, उस्मा हिलाल कंपोजिट PU कॉलेज. आलिया तस्नीम सैयद अली इमाम PU कॉलेज, रुस्ता अहमद सैयद अली इमाम PU कॉलेज,
And the runner-up trophy goes to Amina PU College. Trophy goes to college. I go to teacher who has स्ट्रेट लाइन में छोटी स्ट्रेट लाइन आगे आगे आइए कैमरामैन सदफ मरियम, आयशा खानम, मुस्कान फातिमा। इस शेर के साथ मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। हर कदम तुम्हारा मंजिल की तरफ उठे, हर कदम आपका मंजिल की तरफ उठे, आसमान के सितारों को छू लो तुम, खुशियाँ हरदम तुम्हारी राह तकी, चिन्हों की तरह झिलमिलाओ तुम। मुबारक। I request Asma Khanum and Mubashira ma'am to kindly collect the trophy on behalf of Preeti Composite PU College. Ma'am, here, हम teachers. And then either come. Asma Khanum and Mubashira ma'am. They have worked a lot behind this, and the other team also. Hold the trophy, children. Hold the trophy. Yeah. Stand in straight line. सीधे खड़े हो जाओ. Straight one line. Yeah, go back. और थोड़ा आगे आ जाओ. Yes. So, moment to be captured. पहली राउंड में BEC Composite PU College ने 70 मार्क्स के साथ फाइनल्स में क्वालिफाई किया है एंड सेकेंड राउंड में हिलाल PU कॉलेज ने 65 पॉइंट से क्वालिफाई किया है एंड थर्ड राउंड में आमिना PU कॉलेज ने अगेन 70% से क्वालिफाई किया है. Now I request all the three teams to come on the stage for the final round of the quiz. BEC Composite PU College, Hilal PU College and Amina PU College. शख्सियत के मालिक हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज का दिन हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर ऐसी अजीम शख्सियत को मिला। आपने PhD की डिग्री 2022 में टुमकुर यूनिवर्सिटी से हासिल की है, MPhil बैंगलोर यूनिवर्सिटी से हासिल की हैं और आप ऑल इंडिया रेडियो में बहुत से प्रोग्राम्स होस्ट कर चुके हैं। दूरदर्शन में भी आप बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए हैं। सालार रोजनामा यानी कि सालार न्यूज़पेपर में भी 20 से ज़ायद मजमून आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, 7 पेपर प्रेजेंटेशंस करके हैं और आपके दरस व तदरीस का तजुर्बा 29 साल से है यानी कि 29 ईयर्स से है और आप PET सादत उन्नीसा डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से भी काम कर चुके हैं और आप 2015 से लेकर अब तक अल-अमीन आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में शोबे उर्दू में काम कर रहे हैं प्रोफेसर की हैसियत से। आप उर्दू लेक्चर होते हुए भी इंग्लिश में बहुत सारे मास्टर्स कर चुके हैं। तालियों के साथ आवाज़ गूंजनी चाहिए। और मैं मेहमान खुसूसी डॉक्टर सईदा बेगम साहिबा को
की शॉल पोशी के लिए नाजिया हुसैन साहिबा से इल्तिमास करती हूँ कि वो आए और मैम का एजाज करें। This way, this way. जुबेदा सुल्ताना सेकेंड HCBA, अमीना सर सेकेंड CEBA, हाजिरा जायबा रुकैया सेकेंड HCBA, हलीमा सादिया सेकेंड HCBA, अफीफा परवीन सेकेंड PCMB, उम्मे कुलसुम सेकेंड CEBA, सानिया बानू फर्स्ट HCBS, सईदा गौसिया फर्स्ट HCBS, सुनैना फिरदौस 7th स्टैंडर्ड, हलीमा सादिया सेकेंड HCBA, सानिया कौसर सेकेंड HCBS। जीते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए हों, जीते वो नहीं जो कभी नाकाम ना हुए हो, जीते वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। सीरत रसूल एक ऐसा उन्वान है जिस पर तमाम मोमिनीन जो हैं क़ुरबान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी हो, माशरती ज़िंदगी हो, मक्की ज़िंदगी हो, मदनी ज़िंदगी हो, हमारे लिए नमूने हयात है। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजता हूँ, लिहाजा मोमिनीन तुम भी दुरूद पढ़ा करो। तो जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद भेजते हैं तो मैं और आप जो है दुरूद पढ़ना ही चाहिए। और मैंने बताया कि सीरत एक ऐसा उन्वान है जो हमारी अगर ज़िंदगियों में दाखिल हो जाए तो चार चांद, इंसान की ज़िंदगी में चार चांद लग सकते हैं। हम दुनिया की तालीम जितनी भी हासिल कर लें, सिर्फ उससे दुनियावी फ़ायदे होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अगर अपनी ज़िंदगियों में लाते हैं तो दोनों जहां कामयाब हैं। और मुझे पहली बार जो है मैं क्विज़ मास्टर के तौर पर जो है मैं तशरीफ़ लाई हूँ और मुझे बेइंतहा खुशी हुई। पहले तो मैं बड़ी घबराई हुई थी कि क्या मैं इस काम को सरअंजाम दे सकती हूँ, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा, देखा और फिर जो है मुझे बात समझ में आ गई तो फिर मैं आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ कि बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट जो है हमेशा कोई ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं जिसमें जो है बच्चों की तलबा और तालिबात की जो है इस्लाह होती है, हौसला अफजाई होती है और जो है उनसे जो है शहनशीन पर उन्हें आने का मौके मिलते हैं। ये बहुत ही अहम बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हम अमली तौर पर अगर अपनाते हैं तो दोनों जहां हमारे कामयाब हैं। प्रोग्राम आप कितने जो है ना होस्ट किया एज अ क्विज मास्टर, तो हाउ डू यू फील? मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम नहीं उसमें कुछ चंद गलतियाँ भी हुई होंगी, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ
کہ ایک ایسے عنوان پر جہاں ہماری زندگیاں قربان ہیں، میں اس پر جو ہے کام کرنے پر بے انتہا خوش ہوں۔ میرا پیغام تمام مسلمان مینجمنٹ جو ہیں، مطلب جتنے بھی مسلم انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس طرح کے پروگرام اگر منعقد کرتے رہیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو حالات، ہمارے حالات حاضرہ سے میں جو مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو جو ہے ہمارے مسلمان بچوں کو اس طرح کی تعلیم، تربیت اور اس قسم کی چیزیں فراہم ہونی چاہیے تاکہ وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکیں۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا نور ہمارا نبی، دونوں عالم کا نور ہمارا نبی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ عزتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے سب ہماری بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے سب ہماری بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کی مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ 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 آ گئے۔ نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، ہر سن پہ چھائی، ہر سن پہ چھائی، تھی رات کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے الوداعی تقریر میں بولنے کا موقع ملا، اس لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ آج کا یہ دن پر نور محفل میلاد النبی کوئز کمپٹیشن یادگار رہا اور خصوصی دن کا حامل رہا۔ میں ہمارے BET ادارے کی جانب سے آپ کے مہمان خصوصی اور ناظم مسابقہ محترمہ ڈاکٹر سعیدہ بیگم HOD شعبہ اردو الامین آرٹس اور کامرس کالج کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ہماری اس دعوت قبول کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس بزم میں شرکت کی۔
तमाम जिम्मेदारान BET का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जनाब सिद्दीक पाशा सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अनीस सर, अब्दुल मुहीब वर्किंग चेयरमैन, जनाब शेख उमर सर नायब चेयरमैन, जनाब एस महबूब सर नायब चेयरमैन, जनाब मुजीब अहमद सर जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब रियाज अहमद सर एडिशनल सेक्रेटरी, जनाब शकील अहमद सर इंटरनल ऑडिटर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जनाब सैयद सर साहिब खजानची का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जनाब करीमुद्दीन ट्रस्टी, जनाब शफीउल्लाह ट्रस्टी, जनाब फारूक अहमद ट्रस्टी, जनाब इरशाद अहमद ट्रस्टी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज के तकरीब में मौजूदा मुख्तलिफ इदारों के प्रिंसिपल साहिबान, असातिज़े कराम, तमाम तलबा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे इदारे के सारे असातिज़ा कराम, खुसूसी अस्मा खानम मैम, अज़मतुन्निसा मैम, नाजिया मैम और सारों का फर्दन शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस महफिल की रौनक बनकर हमारी हौसला अफजाई की और एजाज़ बख्शा। हमारे इस इदारे में खिदमत अंजाम देने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं इन शुक्रियात कलिमात के साथ जलसे का इख्तिताम करना चाहती हूँ। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हर शर से, हर बला से, हर मुसीबत से, बदनजरी से, हासिदीन के हसद से, शरीरों की शरारत से, फितीन के फितने से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें ढूंढती होंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने तुम कहाँ हो। जज़ाकल्लाह खैर। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दज्जाल। अल्लाहुम्मा अर्हमनी या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अस्सिहत वल इफ़्फ़त वल अमानत वल हुस्न व खल्क़र रिज़ा। अल्लाहुम्मा अर्हमनी या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबि व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। या रब्बी लकल हम्दु कमा